Hello, Namaste, Salam. Welcome to Baaton में with Sapna Vyas. Get ready to meet Boman Irani. We know him as an amazing actor, इसलिए मुझे इस बारे में तो बात ही नहीं करनी. But what I want to talk about him is he's an amazing inspiration. I genuinely look up to him, and he is one of my top inspiring figures. So I can't wait to get chatting with him. So let's get to it. Boman sir, welcome to Baaton with Sapna Vyas. आपने मेरा नाम गलत बोला. सर नहीं बोलना है. ट्राई कीजिए फिर से. ट्राई करो. सर मैंने मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसे सर बिना बोलना. तो फिर ये इंटरव्यू ही नहीं हो पाएगा. फिर करेंगे. ये नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ये हमसे ना हो पाएगा. सर कैसे किसने वो अंग्रेज सबको बुलाते सर सर. But I have seriously huge respect for you because the person you By are. By not saying sir, it doesn't mean कि आप मुझे respect नहीं करते. So Boman ji, thank you. Welcome to Baaton में with Sapna Vyas. Thank you. Sapna Vyas ma'am. Oh no. चलो. मैं नहीं बोलूँगी सर, ठीक है ना? I've always seen you so grounded. I've known you from years, and the quality that I admire in you is how grounded you are. Even after achieving so much in your life, the name, the fame. So I must ask you this. What keeps this star grounded and so humble even after achieving so many accomplishments and awards? So, मेरे मन में, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आप बोलते हैं ना, so much of achievements, so many things that are accomplished. I don't think I've done anything. You may think, others may think, I don't think, and it's a good thing to be in that mind space. अगर हमने सोचा कि मैंने अचीव किया तो फिर आदमी स्लो डाउन हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है. और मुझे लगता है कि मैंने इतना तो क्या किया, बहुत कुछ करना है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ करने के लिए बाकी है जी. तो अगर मैं सोचूं कि मैंने तो अचीव कर लिया, तो ग्राउंडेड की वजह मैं थोड़ा लेविटेट कर लूं. अचीवमेंट खत्म हो गई ना वहाँ पे. लेविटेशन के बाद हो गया काम. So I don't believe I have achieved that much. I believe I need to do a lot more. Please understand that I started my film career very late in life. So in that sense, I'm not even 20 years in the industry. Yes. So people take a whole lifetime. My lifetime started, my bachpan started at 44. So to me, I have a lot to do. Yes. So, and what is being grounded? Grounded क्या होता है? सर नहीं, उसका मतलब क्या हुआ वो समझाइए. मेरे अकॉर्डिंगली कि इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विथ यू, टू टॉक टू यू, टू रिलेट टू यू. देयर आर नो मास्क. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज़ वी आर बोथ ह्यूमन बीइंग्स. समझ में आया ना? आपसे आधे भी नहीं, 1/10 अचीवमेंट करने के बाद, अचीवमेंट भी नहीं बोलूँगी, कुछ सोशल मीडिया फेम मिल गए, फिर भी लोग बोलते हैं टॉक टू माय मैनेजर, टॉक टू माय ये, टॉक टू माय वो, और इतना एयर लेके घूमते हैं कि उनकी हाइट से ज़्यादा उनका ईगो होता है. एंड व्हेन आई टॉक टू यू, आई एम लाइक, I don't have words. I'm so mesmerized even just talking to you. And I remember कि first time जब मैंने आपसे बात की थी, I was literally starstruck because मैं walk कर रही थी at the club that I go to evening में, और स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे आपकी मूवी चल रही है और मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ. I was like ये तो ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन है. नहीं, लेकिन आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है, that फीट ऑन ग्राउंड. मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप, इफ यू आर फ्लाइंग, आपने कहा ना हाइट से ज्यादा एटीट्यूड होता है. इफ यू आर फ्लाइंग, यू विल गेट फेम बिकॉज ऑफ दैट. कोई सवाल ही नहीं है शॉर्ट टर्म फेम. कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को जो आदमी इंपॉर्टेंट समझता है, वो देयर इज अ वर्ल्ड यू क्रिएट अराउंड यू. और वो जो फेम होता है मिल जाता है. किसी को भी एडवाइस में दे दूंगा ये कि आप थोड़ा ये करो, थोड़ा ऐसे तामझाम करो. यू आर 110%, इट विल हेल्प इन योर इमेजिंग. राइट. बट आप सीखते क्या हो उसके बीच, वो इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इट दैट यू आर लर्निंग? इज देयर समथिंग न्यू यू आर लर्निंग? इज देयर न्यू क्राफ्ट यू आर लर्निंग? हैव यू अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर? If you are an actor, I'm saying, if you are an actor,
Have you understood human nature? Have you understood human condition? Have you understood all of us are the same? Everyone has aspirations. Can you put that in your roles? अगर कर रहे हो तो अकड़ो. अगर अकड़ने से ये सब नहीं हो रहा है तो अकड़ना बंद करो. एटीट्यूड मत रखो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्राफ्ट. ये मेरा थोड़ा प्रीची हो गया, सॉरी, लेकिन आपने बात छेड़ी, इसके लिए नहीं. Very smart. Sir, you are also like giving back to the society in the form of, you know, आपने जो भी अभी achieve किया इतने सालों के hard work के बाद, you have learned so much and now you are to trying to give back in terms of teaching people how to write and how to act better. तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे and how are you doing that? Can you please share? So मैं अपनी एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था. I tried to write a film. It was well written. Right. खुद लिखी थी, बहुत अच्छा लिखा था मैं सोच रहा था. और सबको मैं पढ़ा, बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन वो सचमुच अच्छा है. तो मैंने एक स्टडी की, बहुत सारे बुक्स पढ़े. I read any amount of books and I realized that I'm not following a certain science or a structure. अगर अभी आप बोलेंगे कि राइटिंग में साइंस और स्ट्रक्चर कहाँ आ गया? गाने में भी साइंस और स्ट्रक्चर है, पेंटिंग में साइंस और स्ट्रक्चर है. आपका एक स्ट्रोक्स में साइंस होता है. स्ट्रक्चर इतना है कि इतने फ्रेम में ही हमको पेंटिंग करनी है या इतने फ्रेम में पेंटिंग करनी है. तो राइटिंग में भी हम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लेकिन उसका एक अंत होना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो मैं सीखने गया अमेरिका, और साल में 3-4 बार जाता था. वहाँ पे एक गुरु मिल गए. टर्न्स आउट टू बी, I'm lucky he turned out to be an Oscar-winning writer, and he became my friend. Right. And all that he taught me, Sapna, I put in my script. Yes. लेकिन मैं हर शाम को अमेरिका में सोचता था. मैं सब नोट्स बना के लिखता था, पूरे दिन में काम करता था, नोट्स बनाए, और सोचता था जो भी मैंने सीखा है, जो भी यहाँ पर है, क्या एक स्क्रिप्ट के लिए काफ़ी है या उसे स्प्रेड करना ज़रूरी है. So I started online sessions called Spiral Bound. Right. They are free. Yes. It's not, so I can promote it over here simply because it is not a business enterprise. Yes. You don't mind even if it was a business enterprise. But it is free because no, in this room कोई अगर सुन रहा है, अरे मुझे भी राइटिंग का शौक है, क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल. आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं. मैं कोई किसी को सवाल नहीं पूछता हूँ कि आपने क्या लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री में आपका क्या मतलब एम्स और एस्पिरेशंस क्या है. आप मुझे 10 पेज का एक सीन लिख के दे दो, मैं देखूंगा. अगर आप क्लास के लायक हो तो ही आप आ सकते. नो, आपको कुछ सीखना है, कुछ भी सीखना है, आओ. 650 ऑनलाइन क्लासेस कर चुका हूँ. वाओ. सो सर ये कौन से डेज पे होते हैं, क्या होता है इसका? सो इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी. अभी 650, 3 साल के अंदर 650 क्लास किए, तो आप देखो कितने डेज हो गए एक साल. यस यस. सो द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. राइट. सो द डे बिफोर, टुमारो देयर इज अ सेशन एट 11:30. आपको नोटिफिकेशन आएगा 11:30 बजे. सब लोग नहा धो के बैठ जाते हैं. So they join on Zoom or Zoom. Okay, Yeah, okay. yeah. And I think you began since pandemic, if I'm Since not the wrong. pandemic, उस वक्त everybody was a little Yes. was a little unsure of their future. जी. Their future, their health, their mental health. Yes. People were so unsure of what was happening in their lives that this became, even for me, it became an oasis, a Yes. Sahara, Right. and became a family. And we Right. now have a huge family, over 1,000 students. Wow. 4 से शुरुआत की थी. Right. It's important to share, important to give back. The industry has given me everything I have to. And I've learned so much from the industry. So I think it's important to give back. Don't you think so? For sure. And I'm so happy कि आप इतना अच्छा platform create कर रहे हैं for people, and they are so lucky to connect with you this way, because I don't just see you as an actor or a person who has obviously put in a lot of hard work, but you have truly you're truly true to your words, or you are true to your whatever you have learned. You're so true to it that is what one should learn from you, more than just writing. That how to stay humble, grounded, like I said, and be honest even after achieving so much. Sapna, I do what I have to do. You know, I feel very odd when you say humble. Sir, आप हो, but what is success for you? Legacy.
It doesn't matter how much money you make. Yeah, but you don't go to a museum and see a great painting and say, यार ये इतने रुपए में बिकी है. कितनी खूबसूरत है और बरसों तक लोग आके देखेंगे इस म्यूजियम में. So there's legacy is important. Sharing is important. Right. And true happiness is success. True and genuine happiness is success. Because you can make a lot of money, you can get a lot of fame, you can be, millions of followers on Instagram. But if you're not happy, what's the point? Yes. You tell me. Yeah. Because then you will just invest your time in maybe pretending to be happy or pleasing the people who are watching you online. So true. It's difficult to be happy all the time. Yes. We are stressed. We got a lot of problems, health problems, family. We got to deal with so many things on a day-to-day basis. But it doesn't mean that you do not develop a system Right. to fight that stress Yes. and find happiness, and more importantly, to share happiness. It's very important. True. If you have the ability to spread. Yes. सर आपने इतने सारे आइकॉनिक रोल्स किए हैं. नहीं, I did not mean to nod for that. Sorry. फिर से बोलो आपने. हाँ, आपने इतने सारे आइकॉनिक रोल्स किए हैं. A, which has been the most difficult, and B, which is close to your heart. मैं थोड़ा irritating किस्म सा आदमी. I like to make all my roles difficult. Okay. हाँ. अगर easy है तो complicate करो. So that you can stretch yourself to doing something that becomes special for you. You have to enjoy it. Yes. If you don't enjoy it, they won't enjoy it. Yes. So even the roles that aren't so, as you call them, iconic, I have enjoyed those roles very much. I've learned a lot during doing those roles. But for me, the most difficult role may have been in Khosla Ka Khosla. Right. It was. Because it was a role that everybody said I was miscast. And I was. Bombay Parsi, playing a Delhi Khurana. मतलब पहली बार मुंबई से बाहर का कैरेक्टर मैंने निभाया. And it was difficult. I didn't know that kind of person. I never met that kind of person. Right. So apart from that, the research, the study, the observation, all that is fine. But the best part in looking for a character is to find his flaw and you find his wound and what is it that he wants. Yes. And this is for all young actors. Find what the actor wants, the character wants. क्या चाहिए उसे? Right. उसको जीने का मकसद क्या है? हाँ. उसे ढूंढो. Number 1. Number 2. What is his fatal flaw जो उसको destroy कर सकता है? And 3. What is his wound? What is his pain? If you find that, the character becomes real. So while I did a lot of research on Khurana and Khosla Ghosla, I don't know if you remember the film. Sir, I do. I think we found out a lot about that character. That he was as vulnerable as Khosla. He was as afraid of or feeling bad about his son as Khosla. But his flaw was that he was a greedy man. And we have to change. It's like to see characters change. So for me, that was the character I loved the best. Khurana, of course, virus people love, and Asthana. My wife's favorite is Lucky Singh. बहुत पसंद करती है लकी सिंह को. वेल्डन अब्बा के अब्बा जी. मुझे बहुत पसंद है वो. रियल कैरेक्टर है. You feel for that person. But I don't talk too much about my old characters. I try to move on. Like, I'm starstruck by you. Who do you get starstruck from? Who do I get starstruck by? So many people I feel a little. Okay, let me not put it another way. I feel happy to be in their presence. Like for example, अभी बच्चन साहब का बर्थडे था. जी. Right? तो मैं जब छोटा था तो बच्चन साहब की हर फिल्म देखता था. और मैं
देखता था, खुश होता, बोला एक दिन इनसे हाथ मिलाऊं. और my heart was thumping जब हमने वक्त में पहली बार काम किया था. You feel. एंड ऊपर से हर पिक्चर में अगर आप देखो तो बच्चन साहब के साथ मैं उन्हें डांटता ही रहता हूँ ऊंची आवाज में. बहुत अजीब सा लगता है. एकलव्य में तो ऐसे चिल्लाता था मैं, एकलव्य ऐसे. Life is a very, very funny thing, you know. It turns things around to the least expect. So yeah, when I met Bachchan Saab for the first time, I was. On the other hand, somebody like Shah Rukh, he has a method of how to make you feel he is very happy to meet you. Shah Rukh का अलग. Shah Rukh पहली बार मैं मिला था दार्जिलिंग में. मैं हुना की शूटिंग पे गया था. तब मेरे रात को लेट से आया था वो. मैं एक दिन पहले पहुंच गया था वहाँ पे. दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो मैं सदरा, मेरा पारसी सदरा, और मैं पैजामा में था, फटा हुआ भी था. यस, यार ये तो शाहरुख खान. हेलो सर, हाउ आर यू? शाहरुख खान. आई एम द प्रोड्यूसर ऑल्सो ऑफ दिस फिल्म. This is your room, that is my room. I am across. Anything at night, please knock on my door. Thank you so much for doing our film. सोचो, हर एक इंसान का एक ऑरा होता है. शाहरुख ऑरा is like that. I met one of my childhood heroes in Hollywood called Sidney Poitier. He was the first black actor to win an Oscar for Best Actor. And he was standing there in front of me. And I was frozen because he was my mother's hero. And she used to talk about Sidney Poitier. He was a breakthrough black actor. So iconic. Really, plus multi-Academy Award winner, heartthrob, taken in movies that only white men could do, and suddenly we have. मैं सामने खड़ा था, and he smiled at me. He said, "Come here." And I shook his hand and said, "My mom's a big fan." He said, "And you?" I said, "I'm also a big fan." So these great people are actually, they've got a way of making you feel comfortable. I learned from that. Yes. Being starstruck, ठीक है, moment is gone, it's gone. Before you saying you're starstruck, by the time I leave the studio, it shouldn't matter anymore. Remember, you are a human being, I am a human being, everybody here is a human being, all wear our pants one leg at a time. Nicely put. Yeah. And so what makes us special? Respect. If I respect, I will be starstruck. So I would like to believe that there is a certain amount of respect, and that's about it. So nicely said, sir. If you could have a conversation with Dr. Asthana from Munna Bhai MBBS, what medical advice would you seek from him? Don't do this stupid laughter therapy. It is utterly useless. No, I'm joking. What advice can I give Dr. Asthana? I think all that he did was the reverse of all that he did was the best advice. He did everything wrong. Right. And would you still trust him for medical advices? No. No, because for me, a good doctor, when they enter the room, I feel better. The medical advice anybody can give me, yeah, certain things maybe not, but a doctor's presence is out of respect. Yes. And if I respect you and I look at you and I say, this man is making me feel comfortable, not afraid. I believe that your system responds. True. Responds to not only humanity but kindness, patience. Take time to listen, because genius doctors like to talk, but genius doctors should also listen. Each patient is different. Yes. So all that Asthana taught you, I would do just the opposite. That would be my advice to Asthana. Because having faith in the doctor, I think, helps you heal faster. Absolutely. And kindness goes a long way. When a doctor holds your hand, you feel nice. Yeah. Which co-star of yours has the most infectious laughter?
So Ritesh, Farah, Shahrukh also, when he laughs like a child, very sweetly. But I have worked just few times in ads actually with the beautiful Ramya. She has a very infectious laugh, very infectious laugh. She laughs loudly and very beautifully. You know the great Ramya of Boman fame. Yeah, she's so wonderful, such a wonderful personality she is. I love the way she laughs. She just lets go. I say anything stupid, she laughs. What's the most... One second, let me think of somebody else who has a great laughter. Satish Kaushik had great laughter. He would laugh all the time. He used to laugh all the time. The great Satish Kaushik. Such a wonderful actor he was. You often give many poj, as you say. Am I speaking it correct? Pronunciation is right? Correct. On your social media account, and trust me, we love those. How did you coin this quirky thing? Because this poj to I've only seen on your post. I'll tell you why. I'm very awkward when it comes to वो वाला. तो उसका मजाक उड़ा लो और वो पास कर लेते हैं. We slip it through मजाक. अदरवाइज बोलेंगे अरे यार तू इतना स्टाइल क्यों मार रहा है यार? तेरा काम है वायरस बनना या अस्थाना बनना. तू ऐसे सूट वूट पहन के ऐसे क्यों खड़ा है? तो you have to make fun of yourself and then सब कुछ लाजिम है. सब कुछ निकल जाता है. As you are an actor par excellence, and I know our viewers will also agree when I say that, do you believe that method acting requires isolation, or it's just a little PR gimmick actors use? No, it's not completely a PR gimmick. What is the real meaning of method acting? Actually, that's a whole Stanislavski book, which we'll need to read, but now let's not go there. So, to make a long story short, what is method acting? Your method of finding the character is method acting. Okay. What's the method you use? Some people will say, I'll learn my lines 500 times and come on the set and do what I have to do. Okay, that's your method. Okay. Works for you. May not work for me. There are some people who want to live through every single moment before coming onto the set. Live in a, if you're living in a say if you live in a slum, they'll go and live in a slum, feel it. That's his method. And hey, what works for you works for you. It may not work for me, but I don't think it's a PR exercise. People are actually wanting to work hard. Right. They are actually wanting to be truthful. So, long story short, especially for you, what is method acting? Method acting is the endeavor to find truth. Am I truthful in the moment? I can do so much of method acting. I don't bathe. मैं 20 दिन नहाया नहीं क्योंकि ये कैरेक्टर ने 20 दिन नहीं नहाया. और अगर कैमरा के सामने आपका परफॉर्मेंस ट्रूथफुल नहीं है और आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो कि लोग बोलेंगे कि क्या एक्टिंग है मेरा, तो मेथड का कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप वो भी करेंगे लेकिन कैमरा के सामने, इफ यू फाइंड ट्रूथ, इफ यू फीलिंग द मोमेंट, to me that's the best method. Right. Because you can do any amount of preparation, but if it's not truthful in front of the camera, it has no value. However, I'm hugely respectful of people who do that kind of thing. I'm hugely respectful. It is wrong to say that it's PR. I do a different kind of preparation. As I said a little earlier, I find the character's faults, I find the character's wounds, I find the character's wants, and most importantly, I find the character's need. Want है कि मुझे इस फिल्म में मुझे वर्ल्ड कप जीतना है. उसका want है, मुझे जीतना है. I want to win the World Cup. Need क्या होता है? एक इंसान के तौर पर आपने अपने आप में क्या तब्दीली लाया है? What is it that you've changed within yourself? That is also important. So that is my method. Of course, if I'm playing a Gujarati character, I'll learn the accent, the body language, the milieu, the surroundings. बहुत ज़रूरी है. लेकिन वो सिर्फ वो करे और बाकी की जो
जो ऑनेस्टी है कैरेक्टर की वो रह जाती है तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। True. थोड़ा लंबा हो गया ना आंसर? नहीं। चलेगा ना? अरे क्या बात है बोमान। What's the weirdest rumor you have heard about yourself, and how do you handle rumors? Rumor? Yes. कि मैं बहुत खड़ूस हूँ। बिल्कुल नहीं हो, वो तो रूमर नहीं ही नहीं, है। वो तो आप जानते हो। Before you met me, what was your impression of me? सर खड़ूस तो नहीं थी, honestly. नहीं, अच्छा गुड। हाँ, सच लेकिन में। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कड़क हूँ, वो मैं- रोल की वजह से। और सर जैसे मैंने बोला कि लोग कुछ बिना करे भी इतने एटीट्यूड में होते, तो आपने इतना वो किया तो ये सोशल मीडिया की वजह से लोग जजमेंट्स तो एक हो जाता है ना कि अगर ये 1.56 में खेल रहा है मिलियन में और इसको इतना एटीट्यूड है, तो इन्होंने तो इतनी मूवीज की, इतनी खुद इतने बड़े स्टार है, तो इनका एटीट्यूड तो क्या ही होगा। नहीं, आई थिंक ये जो वायरस और डॉक्टर्स था ना का जो ऑरा था ना, वायरस आ रहा है वायरस, शायद मैं भी आता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, मैं मजाक से टेबल पे जाता हूँ, नर्स गिव मी स्टेथोस्कोप प्लीज, और ऐसा स्टेथोस्कोप मार के चलता हूँ, तो यू नो पीपल रियली समटाइम्स बिलीव दैट यू हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर। सो आई डोंट नो इफ इट्स अ रूमर, but there's a belief system that I could be खड़ूस। Yeah, wrong perception. That's okay, it's a rumor, no? Then आपको क्या लगता है रूमर क्या है मेरे बारे में? सर मुझे तो कोई रूमर्स पता ही नहीं है, मैं तो सब इतना जो भी पढ़ा है मैंने आपके बारे में पॉजिटिव ही पढ़ा है, तो आई डोंट हैव एनी रूमर्स, हेंस आई आस्क्ड यू। What's the strangest fashion trend you ever tried or considered trying? Did you draw any inspiration from Ranveer Singh while working on Jesh Bhai Jordar? Oh भगवान। See, रणवीर सिंह pulls it off, but पहले 10 कॉस्ट्यूम जो पहना उसने, क्या अभी तो लगता है कि विदाउट दैट ही डजंट लुक लाइक रणवीर सिंह। सो इट्स व्हाट यू पुल ऑफ इवेंचुअली। अगर मैं ऐसे कुछ करूं तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। सर आपने कोई ऐसे ट्राई किया है रियल लाइफ में, नॉट ऑन स्क्रीन? रियल लाइफ में मैं 1-2 बार शॉर्ट्स पहन के गया था एयरपोर्ट पे। थोड़ा मैंने पब्लिक को देखा, बुढ़ा ट्राई कर रहा है कुछ। मेरे बेटे ही मुझे बहुत दे मेक फन ऑफ मी टू मच। घर का भेदी लंका ढाई टाइप्स। हाँ, आई एम कंफी। नो, सो फैशन में अच्छा, व्हाट आई डोंट लाइक दिस चप्पल वेयरिंग फैशन। मुझे अच्छा नहीं लगता। आई लाइक वेयर स्नीकर्स, वेयर शूज, बट वेयर शूज वेरी इंपॉर्टेंट। चप्पल मुझे अच्छा नहीं लगता। No chappal. No chappal. If you had to survive a zombie apocalypse with a group of Bollywood actors, who would you want to be on your team and why? So Farah, Okay. Ritesh, Abhishek, ये तो है ही है। Because they Shah laugh a lot. Shahrukh, very good. I think this is it. Achha. Because we will be. They laugh a lot. To me, that is very important. Farah, naughty. Abhishek, naughty. Ritesh, naughty. मैं बैड वर्ड बोल सकता हूँ उन लोग के लिए। सब नालायक है। और नालायक इन अ गुड वे। इतने नालायक, इतने नॉटी है ना कि टाइम पास हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इट विल बी लाइक टू बी अ ज़ॉम्बी। But it will help to have their presence. They're just too much fun. Loud, noisy, चिल्लाना। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? बस अच्छा लगता है, प्यार दिखा रहे एक दूसरे को। I love them very much. What's the quirkiest souvenir that you've got from any country or any place you've visited? Nothing quirky. किसी ने मुझे ओपनर दिया था, बॉटल ओपनर। मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन रखा है मैंने। I have no idea why somebody gave me a bottle opener. शायद ऐसा लगता है कि उसको बहुत पीने की आदत है। I didn't want to say that. दारू ओपनर से नहीं खुलता है। That's it. अच्छा। बूच होता ना उसका, क्या उन लोगों को उतना भी मालूम नहीं है। So maybe they thought I bottle opener. जरूरत है इनको। I don't know why that guy said this is for you. I said okay. Bottle opener. Okay. If you could have a personal theme song that played whenever you entered a room, what song would it be?
सुबह वो तो ऐसे भी लोग वही बजाते हैं, सुबह हो गई मामू, वैसे भी लोग बजाते हैं। पूछते हैं ना इवेंट्स में, इवेंट्स बहुत करता हूँ मैं फॉर कॉर्पोरेट्स, व्हाट शुड वी प्ले फॉर एंट्री, तो पीछे से सुबह हो गई मामू, अच्छा अच्छा ठीक है वही बजाना, और मुझे क्या है। बट माई थीम सॉन्ग इज एन इंग्लिश सॉन्ग कॉल्ड माई वे विच आई सिंग. I sing at the end of every session. I sing a song called My Way, Right. and it kind of encapsulates my belief system and my life, which I sing at the end of every session. Right. So can we request No, today उसका also? पैसा लगता है. Oh, so sad. सर नहीं है, बजट नहीं है सर हमारा. कोई बात नहीं. Thank you for being honest so far. Now I'm going to ask you अरे rapid मरी fire जाए. questions. तो are we ready? हाँ? आप रेडी हो? रणबीर और रणवीर, who is your favorite? You have become female करण जौहर ऐसा लग रहा है. क्या है? और कॉफी Without तक नहीं any पिला, budget of चाय भी नहीं coffee? पिला है, कटिंग चाय भी नहीं पिला है. सर ऐसे मत बोलो सर, लोग देख रहे हैं सर. बजट है सर, चाय पी पिला है, आपने? चाय पिला है. मैंने खुद मंगाई कपरी से. सर सिर्फ हैम्पर का बजट नहीं है और बजट नहीं है? दोनों बहुत लविंग है. अच्छा. दोनों बहुत लविंग है, दोनों बहुत अच्छे एक्टर है. लेकिन मैं रणबीर को पहले से जानता हूँ, तो मेरी पहली दोस्ती रणबीर से हुई. वो भी नालायक ही है, दोनों नालायक है, बहुत प्यारे हैं. लेकिन व्हाट वाज द क्वेश्चन? हु इज द फेवरेट फॉर यू? जब मैं रणबीर के साथ काम करता हूँ तो रणबीर मेरा फेवरेट होता है. जब मैं रणबीर के साथ काम करता हूँ रणबीर मेरा. सर इट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप. बस सिचुएशनशिप है. व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल फैन एनकाउंटर यू हैव हैड? एक बंदे ने मेरे ऊपर सिगरेट फेंकी थी. मैं गाड़ी में से उतरा, सिगरेट पी रहा था स्टाइल में. मुझे देखा सिगरेट और लाइटर दोनों मेरे सर पे. क्यों किया? मैं डर गया, मुझे मालूम नहीं. अच्छा ओके. सो स्ट्रेंज नो? Yeah. If your life were a movie, what would the title be? Let's have fun. Have you ever had a paranormal experience? सपने में देखा था मैं बहुत पतला दुबला और सिक्स पैक के साथ. बहुत that's my paranormal. That's a great paranormal experience. I know We it is. all should have. The most interesting place you've ever visited for a film shoot? For a shoot. Yeah. So हम लंदन में शूटिंग कर रहे थे. तो ग्रेनिज में एक पुराना मतलब म्यूजियम जैसा है जो कन्वर्ट करके बकिंगहम पैलेस बनाते हैं. तो वहां पे प्रिंस चार्ल्स का डबल और आपरी रानी की डबल और सब थे वहां पे. सब डबल. वो लाफ्टर सीक्वेंस आना हाउसफुल. तो मैं सचमुच हम लोग एक्टिंग कर रहे थे और वो शी वाज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक क्वीन एलिजाबेथ और ही इज लुकिंग जस्ट लाइक प्रिंस चार्ल्स और वो शी इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक कैमिला. और हम लोग वो लाफिंग गैस का सीक्वेंस था. उन लोग भी हंस रहे. मतलब क्या पागलपन है. मतलब ओनली साजिद खान कैन कम अप विद समथिंग लाइक दिस कि क्वीन, प्रिंस चार्ल्स, कैमिला, हम लोग सब हंस रहे लाफिंग गैस की वजह से. और हम लोग रानी को ताली दे रहे. ए रानी क्या म्हणतो. मैं अपना रितेश रानी के साथ, रानी स्टेज पे बैठी है और उसके साथ मराठी में बात कर रही है. रानी भी मराठी में जवाब दे रही. It was the weirdest experience. It was great fun. Have you ever pulled any epic pranks on your co-stars? I'm not good with pranks. I'm not good with. I'm good with. No, I'm not good. Pranks में क्या होता है? सामने वाला डर जाता है और मुझे बहुत. I feel very bad. So I'm not a good prankster. You take care of other people's feelings. I don't care. What's the most unusual nickname you ever had? So, my from childhood my pet name is Bobby or Bob. Now in the film industry, Farah and everybody call me Bombsy. So there was in the compound that some kids used to call me Bobby Biscuit. थोड़ा अजीब सा है ना? Bobby Biscuit.
What's the silliest thing you've done to procrastinate when you should have been working? I was supposed to be working today for very important, but here I am doing an interview with you, Sapna. Should I cry? No. I'll tell you some nice things before we go. No. But I don't like procrastinate to work. I procrastinate to exercise. अच्छा. रोज जिनोबा बोलती है खाने के बाद you must do walk. हाँ, she's right though. And I say, I think it's a superb idea. हाँ. Super. That's going to make a big difference. हाँ. खाने के बाद we must do at least 20 minutes walk. कल. कल. ये हमारे डाइनिंग टेबल पे रोज यही घिसा पिटा डायलॉग बोला जाता है. फिर से पूछो आफ्टर यू शुड वॉक. टेल मी. You should walk after dinner. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. कल. So आज करे सो कल कर, बस, कल बस, वो करे सो चलते रहता परसों. अपने. कल बस. की चिंता क्यों है जब जीना है बरसों. बिल्कुल. What's the oddest thing you have ever collected or considered collecting? अच्छा. Pocket squares. You love it? So now we know if at all anybody wants to gift you something. Yeah. जब हमारा भी बजट अच्छा होगा आपको मिलेगा. आप एक चिंदी दे दो यार मैं जेब में रखूंगा. What's the most unusual or strange request you've received from a fan? So lots of odd requests come. But it's nice when it's simple. For my grandfather, for my grandmother, some person who's not well. I respond to that very, very happily. But what is the oddest thing request from a fan? Cigarette फेंक रहा हूँ catch कर लो. हाँ वो कैसे फेंका था इधर सिगरेट इधर लाइटर. But that's not how you should. I mean, one should really get starstruck. ये तो wrong method है. नहीं वो डर गया तो ऐसा फेंक दिया. ये तो तुमने मार ही दिया उसको. मार ही दिया. And then sorry. Okay. What is the famous, the most unusual request from a fan? एक आया था दिल्ली में. पूरे दिन हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पिक्चर को जॉली एलएलबी. जी. वो ट्रैफिक सिग्नल पे आया उतरा दरवाजा खोला. मामू चलो घर. आई गॉट स्कैर्ड. घर. हाँ और क्या ड्राइवर आप फॉलो करो. चलो बोमन जी उतरो. ओमनी में तो नहीं था. क्या मालूम. No, but he genuinely wanted to take me home traffic signals and not even asking. चलो. हक से. हाँ. फैन हूँ आपका तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा. मतलब ये तो obvious है. Let's go baby. तो मैं भी okay. Can I come in this car? तो आप ड्राइवर फॉलो करो. मुझे फॉलो करो. वो जाके बैठा मैं राइट निकल गया. Thank you so much for being honest, and I genuinely might look nervous today because I have always appreciated you, and thank you so much for joining me on Baaton Mein with Sapna Vyas. I truly have no more words. I am mesmerized in your presence. Thank you so much. Sapna, I was telling you in the elevator, and I'm hugely respectful of what you've done with your life and your career. Lots of people join the industry and a system to achieve fame and achievement. But you did it alone without the support of anyone. I'm sure a lot of people have supported you. Yes. But you did not use a system to become famous. You used all the strength that you had to achieve something and then take it further. And for that I'm hugely respectful of what you do. Thank you. God bless you and all you do. Thank you so much. You're wonderful. Thank you. Thank you to the entire team of Baaton with Sapna Vyas. Thank you, everybody. Thank you. So this episode was no less than a masterclass, and I'm sure you enjoyed it as much as I did. I am so nervous in the presence of Mr. Boman Irani. I hugely respect him, and honestly, not just because he is here, but if I have to mention the top 5 inspiration of my life, he is one of them. So I'm really thrilled I could talk to him in person today, and I will see you in the next episode of Baaton Mein with Sapna Vyas. Thank you. Yay.